Yes, hello Abhinav, welcome on your media platform and let's start your heat transfer snap for your Yes, sir. ONGC final interview. So Abhinav, what is heat? What do you understand by heat? Sir, heat is a medium of transfer of energy. It is a Then what's a, path from. what is radiation heat transfer? How it is different from conduction and convection? So radiation heat transfer occurs when there is a change in the electronic configuration of atoms, and it is different from the other modes of heat transfer as it does not require any medium to take place. You heard about there is a law, there is a body actually known in radiation known as Lambertian surfaces, Lambertian bodies. What are those Lambertian surfaces? Sorry, sir, I have not heard about it. You heard about Lambert cosine law? Yes, sir. Hmm? What is that? Sir, it is related to the intensity of radiation that is transmitted by a body. What are gray bodies? So gray bodies are those bodies whose radiation does not depend on the wavelength. Radiation does not depend on wavelength. Yes, sir. What I mean the intensity of radiation that they are emitting, they emit equal amount of radiation in each wavelength. they are going to emit radiations of single wavelength. Yes, sir. Gray bodies. Sir, I'm not sure, but it is something related to wavelength. Achha, if you plot this E lambda versus lambda plot for a gray body, what kind of pattern you will get? Sir, a wavy pattern, and it will lie below black body. So E lambda is going to vary with lambda? Yes, sir. Sir, it What is will that be E a lambda? kind of a parabola, but it will It means not the be a straight spectral parabola. emissive power, the spectral emissive power is not independent of wavelength. The spectral emissive power is going to change with wavelength. It is going to become maximum and then it will start decreasing. Yes, sir. That's why I asked you, what do you mean by that intensity or the radiations are independent of wavelength? What do you mean by that? Because the radiation, the hemispherical emissive power depends on wavelength. Yes, sir. Sir, I'm not sure about it. Okay. Yes, What is sir. shape factor? The shape factor is suppose if a body is emitting radiation and we are trying to calculate what amount of radiation is intercepted by some other body or some other surface. So it depends on the 3D geometric configuration of the bodies where the both bodies are placed. So shape factor is used for this purpose, that what amount of radiation is intercepted by the second surface. अच्छा, effectiveness क्या होता है? What do you understand by effectiveness of heat exchanger and how we measure it? That effectiveness is actually how much amount of heat is being transferred from hot to cold fluid as compared to what was the maximum possible case. Actually, heat transfer to the maximum heat transfer. Yes, sir. When the maximum heat transfer is going to take place from the heat exchanger? Sir, maximum heat transfer takes place when the temperature difference that is the highest temperature that is of the inlet of hot fluid and the lowest temperature that is the exit of inlet of cold fluid. This temperature difference, if it is we are multiplying this maximum temperature difference with the minimum heat capacity. Yes, sir. Why not maximum heat capacity? That will make it further more maximum. Because if you are multiplying the maximum temperature difference with maximum heat capacity, then I feel it will be numerically higher, right? Numerically, sir, it will be higher, but it will not be possible practically because why it is not possible practically? Because the body with the higher heat capacity will store energy. It will not transmit energy. We want energy to be transmitted from one fluid to another. For that, we require the fluid with minimum heat capacity because it will not store, it will instead transmit.
So after storing, if a fluid is taking some energy, it means it is taking some energy. It is taking that heat from some of the fluid. If there is a heat exchange taking place between two fluids, obviously one only is going to lose the energy, another is going to gain the energy only. Nahin? But sir, for maximum heat transfer, we are defining like C minimum into maximum heat difference. So this maximum temperature difference will be obtained by the body with the minimum That is right. capacity. Good. Yes. तो आप मेरे को बताओ बायट नंबर क्या होता है विनय? What is बायट number? Biot number is the ratio of internal conductive resistance with respect to the external convective resistance. अच्छा, सर्दियों में हम आलू वालू के पराठे बहुत ज्यादा खाते हैं, तो सपोज यू आर हैविंग सम potato in hand and you kept it below some tap water, तो जो surface है आलू का, that is at a lower temperature. Yes sir. So easily you can peel the remove some of the outer material. Yes sir. So can we apply lumped analysis for that case potato? Sir, it depends on the values of the K value, H value. Yes sir. कैसे चेक करोगे आप? अपने एक्सपीरियंस से बताओ. आपके पास एक आलू है, तो just you removed it from some burner and you kept it under some tap. Yes sir. तो जब आप उसको peel करना शुरू करोगे तो easily आप कर पाओगे because the surface is at a very low temperature. I'm Yes, just sir. asking you from your experience, can we apply lumped analysis over in this particular case? And what do you understand by lumped analysis? Yes, sir. I think we can apply because potato is mostly made of water, and water has a very high conductivity. So the Biot number will be very less for potato. So sir, accordingly we can apply lumped analysis. तो कर सकते हैं मतलब. Yes, sir. अच्छा, जब आप ऐसा करते हैं, तो जब आप उसको तोड़ते हैं आलू को, तो क्या अंदर भी लो टेम्परेचर मिलता है, अंदर हाई टेम्परेचर मिलता है? सर अगर इमीडिएटली देखे तो अंदर से सर गर्म ही होता है शायद. अंदर गर्म है, बाहर ठंडा है, तो क्या लम्प्ड एनालिसिस एप्लीकेबल है फिर? सर फिर तो नहीं होना चाहिए. मतलब लम्प्ड एनालिसिस का बेसिक मीनिंग यही होता है कि जो सॉलिड बॉडी है उसका अंदर टेम्परेचर वेरिएंस ना हो. तो सर मतलब ऐसे फॉर्मूला वाइज तो शायद होना चाहिए, पर ऐसे प्रैक्टिकली तो नहीं लग रहा. ठीक है. आप बताओ मेरे को कि फोरियर नंबर क्या होता है, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोरियर नंबर इन हीट ट्रांसफर? फोरियर नंबर इज equal to alpha t upon characteristic length square, and the significance is it is used in transient heat conduction. We draw when lumped analysis is not applicable, we use Hessler charts, and those charts mostly it is defined with respect to Fourier number. Like the graph is between y-axis is like the temperature gradient, that is temperature of body minus temperature of surrounding upon initial temperature minus. अभी ना आपने टाइम कांस्टेंट के बारे में सुना है? Yes sir. तो क्या होता है? Time and how it is constant associated related with the sensitivity of a thermocouple? sensitivity of a thermocouple. So time constant is defined as the time in which the temperature of the body drops to I think 63% of the initial temperature difference with the surrounding. And for a thermocouple, sir, it is used to calculate I think the relative error in measurement. Developed flow क्या होता है? What is developed flow? Developed flow, sir. Developed. DEVELOPED, sir. Yes. Sir, developed flow when the flow enters a constricted path like pipe or something. Initially, there's a some part of the length where the flow is still developing. The boundary layer is created just like on a flat surface. It will be created in 3D space from all the other sides, and
The flow is called developed when the velocity reaches 2% of the free stream velocity. अच्छा, fully developed laminar flow में, we consider two cases majorly, the constant wall temperature and constant heat flux. तो Yes, कुछ sir. मेरे को कुछ practical relevance दिखा सकते हो? Can you give me some example where we can have that particular case of constant wall temperature and constant heat flux? Sir, constant heat flux case would be if a pipe is surrounded by a heating coil or a similar kind of arrangement. Sir, the other case, constant temperature difference will be. Sorry, sir, I'm not able to think of a case right now. अच्छा, local heat transfer coefficient क्या होता है? Sir, it is the heat transfer coefficient at a particular value from the entry length of a flat plate or a pipe. अच्छा, for a Because it is fully constant. developed flow in a pipe, can you give me some representation how the H value is going to change with along the direction of the flow? Yes, sir. It is highest at the starting, and it gradually drops till the flow is fully developed, and then it attains a constant value. अच्छा, why it is maximum at the entry? Sir, so no idea, sir. And why it is decreasing from entry to some entrance length, and after that it is becoming constant? Sir, numerically I can tell because it is inversely proportional to the square root of x. But sir, practically, sir, I don't know. ठीक है, ठीक है अभिनव, I think now I can provide you the feedback. Yes, sir. देखो, वैसे तो ठीक लग रहा है आज अभिनव, थोड़ा सा एनर्जी आपका कल से कम लगा, I don't know why, बट Yes, sir. वैसे ठीक है, आपका नॉलेज ठीक है, बट थोड़ा और इसको देखो अच्छे से. ग्रे मतलब ये नहीं होता कि इंटेंसिटी और द एनर्जी रेडिएशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, ऐसा नहीं होता. Emissivity is independent of wavelength. So spectral emissivity is equal to the emissivity. Yes, What is sir. spectral emissivity? That is E lambda by EB lambda. Yes, sir. The spectral emissive power of a non-black surface to the spectral emissive power of a black surface. That is spectral emissivity. तो spectral emissivity independent होती है, वो चेंज नहीं करती. किसके साथ? वेवलेंथ के साथ. तो spectral emissivity is equal to emissivity. ठीक है? So that's why gray surface के लिए जो पैटर्न मिलता ना, that pattern we get similar to black body. Because अगर आप E lambda versus EB lambda करोगे तो वो रेशियो लोगे ना, ये ब्लैक वाली कर्व, ये ग्रे वाली कर्व, तो E lambda by EB lambda, E lambda by EB lambda, E lambda by EB lambda वो सेम आएगा. नहीं? तो सर वेवी का क्या रीजन होता है कि ग्रे का जो ग्राफ होता है वो वेवी होता है और सॉलिड ग्राफ होता है उसका? तो रियल सरफेस का होता है, रियल सरफेस होगा ना, ब्लैक हो या ग्रे हो, दोनों के लिए क्या होगा? फर्स्ट, with the increase in wavelength, the hemispherical emissive power is going to increase. It becomes maximum. It will start decreasing. ग्रे के लिए भी सर ये स्मूथ ही होता है, प्लैंक्स लॉ ही ब्लैक तो से नीचे दिया होगा. था. प्लैंक्स लॉ आप जानते हो? प्लैंक्स लॉ. हाँ सर, वो 2 पाई h पूरा मत बोलो, lambda. इतना बोलो कि सर the spectral emissive power of a body, black body is a function of what? The wavelength and temperature. तो उसी से तो अपने को पता चलता है, उसी से तो पता चलता है, जो पैटर्न हमारे पास है उसी से तो है वो, जो इक्वेशन है हमारे पास. What we did, we plotted between lambda and t for a particular temperature. What we did, we varied the lambda and we got the curve. Yes, sir. Are you getting? But रियल के लिए क्या होगा? रियल के लिए you will not get that kind of symmetric curve. तो वहां पे मिलेगा, ग्रे बॉडी के लिए थोड़ा ना मिलेगा. तो एक ब्लैक सरफेस है, एक ग्रे सरफेस है. रियल सरफेस will be close to gray surface. So gray body will be much closer to the real surface, but the pattern will be similar to black body. तो एनालिसिस हमारे लिए इजी भी हो जाएगा, एट द सेम टाइम वी विल गेट सम मोर एक्यूरेट, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी एनालाइज द रियल सर्फेसेस. ओके सर. जो मैंने आपसे एक केस पूछा था, जो एक आलू वाला जो केस था, वो नहीं होगा, उसको सोचो ना थोड़ा सा. मैं बता दो रहा हूँ आपको कि उसको आपने जस्ट रिमूव किया, ऐसा होता है ना, आप ऑब्जर्व करते हैं. हाँ जी, हाँ जी. सरफेस को तो ठंडा हो जाता है बड़ी इजीली, आप पानी के नीचे रखते हो, आलू छीलते हो ऊपर से, बट अंदर से तो बड़ा हॉट होता है. देयर आर टेम्परेचर ग्रेडियंट्स आर एग्जिस्टिंग. तो सोचना है,
सोच के बोल रहे हैं कि सर टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है. लंप्ड बॉडी एनालिसिस मींस देयर आर नो टेम्परेचर ग्रेडियंट. At a particular instant of time, temperature is invariable inside the body. Yes, sir. Everywhere temperature is same at a particular moment of time. But yes, with time temperature is going to change, but it is not going to change with x, y, z direction. Okay, sir. तो but temperature gradient आलू में तो exist कर रहे हैं, इसलिए we cannot apply lumped analysis. पर सर फॉर्मूला वाइज कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे HLC/K होता है तो K तो इसका काफी ज्यादा होगा, तो हाँ, तो क्या मेटल से भी ज्यादा होता है क्या? सर मेटल से तो कम ही होगा सर, तो मतलब देखो वाटर फिर के बाइट हिसाब नंबर से. निकाल सकते. अगर इसी की जगह, उसी आलू की जगह सपोज यू आर हैविंग स्टील बॉल, यस सर. तो बिल्कुल आपका लैम्प्ड एनालिसिस एप्लीकेबल हो जाएगा. यस सर. एक्टिविटी बहुत ज्यादा है. ठीक है सर. ठीक है, देन यू कैन चेक. ओके सर. अगर एक्सो आपका सेम है ना, वेदर यू आर यूजिंग मेटेलिक बॉल और हाँ. some kind of potato. Yes sir, H and LC will be same, only K will differ. बिल्कुल, कंडक्टिविटी विल बी मच हायर फॉर मेटेलिक बॉडीज. तो ठीक है स्मॉल सर. लंप्ड मास किसको बोलते हैं? आपको पता है लंप्ड एनालिसिस किसके लिए एप्लीकेबल होती है? अगर कोई बॉडी है उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो ठीक है सर. कंडक्टिविटी अच्छी होगी तो तभी तो इंटरनल टेम्परेचर ग्रेडियंट को हम नेग्लेक्ट कर पाएंगे. तो यस वाटर सर. की कंडक्टिविटी ठीक है, बट वाटर इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ हीट. ओके सर. कंडक्टर ऑफ हीट तो नहीं है ना वाटर का. हाँ सर, मतलब डिफ्यूजिविटी कम होती है इसकी. तो आप ये बोल सकते हो कि इट इज हायर देन एयर. ठीक है, यस सर. इंसुलेटर भी नहीं है, हायर देन एयर, बट इट इज नॉट ए वेरी गुड कंडक्टर. यस चलो सर. आप बाकी कुछ मैंने आपसे पूछे थे, मेरे ख्याल से इफेक्टिवनेस तो आपने आंसर कर ही दिया था. डेवलप फ्लो वो आपको आंसर करना चाहिए. कुछ क्वेश्चन है जो आपने मिस किए, जैसे एच वैल्यू क्या कैसे डिक्रीज करता है, क्यों कांस्टेंट हो जाता है. इनिशियली क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत हाई होगा ना, हॉट यस सर. फ्लूइड में कोल्ड फ्लूइड में. हीट का जो पेनिट्रेशन है वो पूरे पूरे क्रॉस सेक्शन में नहीं है, बिकॉज फ्लूइड इज कमिंग इन कांटेक्ट विद द सरफेस, सो टेम्परेचर इज हायर एट द एंट्री. टेम्परेचर डिफरेंस, यस सर. तो हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, एच वैल्यू ज्यादा होगी. एज द फ्लूइड इज गोइंग टू कम इन कांटेक्ट विद द सरफेस, the penetration of the heat will be there in the entire cross section, and the temperature profile become some kind of particular temperature profile we will get, which is not going to further change with the flow direction when the heat penetration will be there in the entire cross section. तो तब जाके आपका एक क्या होगा, सेट टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा. वहां पे आपका क्या हो जाएगा, बल्क में जो आपका एच वैल्यू है, इट इज नॉट गोइंग टू फर्दर चेंज. थोड़ा उसमें और ऐड करना, आप देखना उसको. ठीक है अभी ना. ओके सर, वो एक आपने वो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछा था पाइप वाले केस में. आप बोलिंग बता सकते हो, कंडेंसेशन बता सकते हो. हीट एक्सचेंजर में होता है ना कंडेंसर में. हाँ हाँ हाँ, कांस्टेंट तो टेंपरेचर इफ वन डिफरेंस ऑफ द वाले फ्लूइड केस में. इज चेंजिंग इट्स फेस, अगर कोई एक फ्लूइड अपना फेस चेंज कर रहा है, हाँ हाँ हाँ. तो वहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर होगा. ठीक है बॉयलर सर. का, इवोपरेटर का, या आपका इवोपरेटर का केस है, या आपका शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर कंडेंसर है, शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर. ठीक है तो सर. एक अंदर कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, बाहर क्या कर रही है, स्टीम कंडेंस कर रही है. स्टीम यस कंडेंसर इतना बोल दो, स्टीम कंडेंसर. सर. हीट ठीक है ना. फ्लक्स वाला तो सही था ना सर? हाँ वो ठीक था. ठीक है सर. ठीक है अभिनव, गुड लक, बेस्ट लक फॉर योर फाइनल इंटरव्यू. ओके सर, थैंक यू सर.